let me first begin. Shall we? Okay, it's about time. We'll start the presentation. Those who join can join later. So what we are going to discuss today is why is it a good time to invest in India? First of all, difference between investment in equity, that is direct investment in share market, and investing in mutual funds. Different kind of mutual funds that are available. Details of some good mutual funds and AMCs. We will also discuss about future plans of Happy Candles investment and with whom we are dealing and what we are up to. So these will be the topics of discussion today. And we will also try to inform you about, what are our future plans and how we are expanding, how we are trying to grow as a company. I will try to mute anyone from where I'll be getting some noise. We will have an open mic session at the end where you can ask your questions relating to the subject or even relating to the market towards the end of the presentation. So, this is basically the chart of Nifty in front of you. You can see only two major blips in the Nifty. This is Nifty as on Friday, and only twice you have seen the major blips in Nifty. One was around 2008 time when there was US subprime crisis. Other than that, we had a big major blip around COVID-19 time in 2020. Sorry. So other than these two major flips, you can see that India, we are talking about the reasons why, you can invest in India, or why India is a continuous bull market, or why investment in India, in Indian equities, in mutual funds is a good idea. So you can see it is a continuous bull market. Yes, right now it is in a consolidation zone. And you can see after making a high of 18,600 something, Nifty is consolidating in the range of between 17,000. It goes down to 16,800. Then it goes back to 18,000. Now again, it is at 17,300 right now. So this process is called consolidation. Whenever a market grows exponentially, and there is no consolidation like the one that we are having, there can be pitfalls. Now, these consolidations are for various reasons. There is a sentiment of an election, a big election, which is considered as semi-final of 2024. That is happening. Then there are issues related to inflation. Then there are issues related to, global geopolitical issues which are beyond our control. The market was going well till last week. Then the things heated up in Russia, between Russia and Europe and Ukraine. So then our market also, we cannot insulate ourselves from global events, and that is the reason that we are stable and we are not falling. That is because huge, as most of you are part of our groups, so you see the numbers that I give there every day related to investment from DIIs and FIIs. So whenever there is a big fall, you see that DIIs and retail participants are buying in big numbers. Whenever market is falling, DII and retail participants are buying. So that is a confidence that domestic players are having in India. That is a confidence that retail investors like you and me are having in India, which makes our market stronger. The kind of right from the time of last October onwards, FII has been, continuously reducing their involvement, continuously reducing their investments in the market. Major reason, as you know, is US Fed
who is on hockey stand. So I had told this in one of the earlier webinars that they are having the taper tantrum. So when they taper the interest rates, then what happens is the bond prices grows, and when the US bond prices grows and goes ahead, so the local investors of US they tend to invest in their own country. अगर खुद के कंट्री में बैठ के एक अच्छा सेफ रिटर्न मिल रहा है, तो इमर्जिंग मार्केट पे कोई क्यों पैसा लगाएगा? This is basically in layman's language why FIIs are withdrawing the money. Okay. वैल्यूएशंस का भी एक इश्यू था कि वैल्यूएशंस ये जो फेज था इधर जो एक्सट्रीमली 7,500-8,000 से लेके 18,600 तक मार्केट चला गया था, तो ये जो बुल रन था उसमें ऐसा बोलते हैं कि भाई घोड़े तो दौड़े ही, घोड़े के साथ गधे भी दौड़े, घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे, वो एक वो बोलते हैं ना। तो ऐसा भी कई बार होता है बुल मार्केट में कि चलने वाले स्टॉक तो चलते ही हैं, नहीं चलने वाले स्टॉक भी चलते हैं। तो बाद में उनमें आता है जब मार्केट को रियलाइज होता है कि नहीं ये तो एक्सट्रीम वैल्यूएशंस पे हमने दे दिया है, पी किसी का 100 हो गया, 200 हो गया, 150 हो गया, 250 हो गया, पी मतलब प्राइस टू अर्निंग। सो व्हेन द पी आर एक्सट्रीमली हाई देन देयर इज करेक्शन, तो एक रैशनल लेवल पे आ जाता है स्टॉक का प्राइस, यूफोरिया खत्म हो जाता है, सोडा बोतल का फिज चला जाता है। तो एक रैशनैलिटी अभी इंडियन मार्केट एट प्रेजेंट ढूंढ रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। वो शायद ऐसा भी था कि भाई वो ढूंढ लिया था करीब ये आप ये वाला आप ग्रीन आप ये देख रहे हैं यहाँ पे करीब 6,000 16,800 के करीब एक बॉटम बन भी रहा था, या हम बोल सकते हैं अभी भी बन गया है। लेकिन फिर जो ग्लोबल इवेंट्स हुए, यूएस फेड और द डेवलपमेंट्स इन रशिया, डेवलप डेवलपमेंट इन यूक्रेन रिलेटेड टू रशिया ऐसा बोलना चाहिए, रशिया में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज की वजह से थोड़ा मार्केट रुक गया है, संभल गया है और अपने बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, या बॉटम बन चुकी है, और फिर ये थोड़ा और कंसोलिडेट होके अपनी जर्नी तो आगे चलती रहेगी। अपनी जर्नी आगे क्यों चलती रहेगी? व्हाई विल इंडिया कंटिन्यू टू ग्रो, कंटिन्यू टू प्रोग्रेस? वी हैव सम रीजंस ड्राइविंग दैट ग्रोथ। रिसेंटली आपने निर्मला सीतारमन जी का बजट देखा था, तो बजट में जो मेजर 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 बातें उठ के आई हैं हमारे सामने, दे आर दीज थिंग्स। जस्ट अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए खाली sorry for the disturbance. So we'll just go back one slide. Yeah. So recently we had a budget. So the things that जो बातें उठ के आई हैं बजट के, the things that come to our eyes, right, from the budget is that government is giving a manufacturing push, which is a very good thing. The funding is for growth. There will be lot of spending, not only this year, but in continuous phases for next many years for infrastructure development. There is a huge capex which government has given for infrastructure development, and the theme, that one major theme that we are getting, जो हमारे आंख के सामने उठ के आ रही है अभी, वो है ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल ग्रोथ in the energy sector, which will be led by renewable energy, organic farming, EV, and the infrastructure related to EV, कि भाई रिचार्जिंग के स्टेशन होंगे, स्टोरेज ऑफ ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन। रिलायंस जैसी कंपनियों ने भी काफी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है हाइड्रोजन में।
5G, ये सब जो कुछ थीम्स हैं ये उठ के आ रही हैं। जैसे लास्ट ईयर व्हेन कोविड वाज एट इट्स पीक, तो हमने देखा था कि फार्मा और आईटी एक थीम थे, राइट। तो फार्मा और आईटी एक थीम थे, तो उससे क्या क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट ये सब एक थीम हो गया था। इन एडिशन टू दैट फार्मा, क्योंकि फार्मा वैक्सीन से लेके दवाइयों से लेके सब कुछ ज्यादा यूज होने वाला था, और जो हुआ भी, तो वो एक थीम चला। उसके बाद जो हमको दिख रहा है, जो हमको लग रहा है कि आने वाले समय के लिए जो थीम हो सकता है, वो है ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल फार्मिंग, सस्टेनेबल एनर्जी, 5G रिलेटेड सर्विसेज, ये कुछ मेटावर्स, ये कुछ थीम है जो हमको आगे बढ़ाएंगे और आगे लेके जाएंगे। ये चीजें बजट और जो बजट के रिलेटेड जो अभी नजारा हमको दिख रहा है और जो प्रोस्पेक्ट्स हमको दिख रहे हैं, उसके बेस पे दीज आर द पॉइंट्स दैट वी आर ट्राइंग, दीज आर द पॉइंट्स दैट विल बी लीडिंग अस इन द नेक्स्ट साइकिल। जो नेक्स्ट ग्रोथ का साइकिल होगा, जो नेक्स्ट निफ्टी का बुल रन होगा, वो कहां से होगा? तो मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल प्रोग्रेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये जो है, जैसे फार्मा और आईटी ने लीड किया था, उसके बाद ये जो सेक्टर है, अब वो हमको और आगे लेके जाएंगे 20,000 की तरफ, 22,000 की तरफ। फिर शायद फिर से एक कंसोलिडेशन होगा, और फिर हम अभी से प्रेडिक्ट नहीं करते कि उसके बाद जब 22 या 24,000 पे निफ्टी पहुंच जाएगा तो फिर कौन से थीम होंगे, फिर कौन से सेक्टर होंगे, ये हमको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। और 2-3 साल में हम देखेंगे कि ऐसे जैसे अभी ये थीम है, वैसे कोई और थीम, सम अदर थीम्स विल कम इन फ्रंट ऑफ अस। और वो थीम मेटल हो सकता है, फिर फार्मा फिर से हो सकता है, हेल्थ केयर रिलेटेड, अगर कोई भगवान न करे नया वेरिएंट आ जाए तो। सो दीज थिंग्स विल कंटिन्यूअसली कीप गोइंग। फाइनेंस हो सकता है, मैं आपको आगे प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा कुछ numbers based on which we can say that this also finance, NBFC as well as banking can also be a sector which can lead us towards further growth. और सर्विसेज तो है ही, देखो सर्विसेज एंड आईटी यू कैन नॉट डिस्काउंट, दैट इज आवर मेजर ट्रम्प कार्ड, so you cannot discard or discount those points. But major the budget tells us that these are going to be the 3 major points which are going to lead us further and forward. जो पीएलआई स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की हैं या जो एग्जिस्टिंग चल रही हैं, that are automobiles and auto components, textile products, food products या food processing, food packaging, organic food, then white goods, AC and LEDs, electronic, the numbers which has already been approved in billion rupees is mentioned here. The numbers are from Sher Khan Research. We had combined presentation. We had some, as you know, Sher Khan is our partner. तो हमने उनके साथ मिलके कुछ डेटा निकाला, कुछ डेटा हमको उन्होंने दिया. तो these numbers are based on the research done by Sher Khan as well as the research done by Happy Candles Investment. As you know, they are our partners. तो उनसे भी हमने कुछ डेटा, कुछ नंबर्स लिए हुए हैं. Then there are specialty steels, solar modules, pharmaceutical drugs and API के लिए भी काफी schemes हैं. Advanced chemical cell batteries. So total allocation for the next 5 years is 1460 billion rupees, right? And that is unbelievably huge number. That close to 1.46 trillion. ट्रिलियन में कितने जीरो हैं अभी भी हमको एक बार सोचना पड़ेगा, तब वो नंबर आएगा. सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इट इज अ ह्यूज investment that is coming to India, investment that is being done to India, investment that is happening in India, money that is coming to India in the form of manufacturing units, the intrinsic investment by existing entrepreneurs,
And yesterday, I think Piyush Goyal ji ka किसी का tweet था. Those who are on Twitter can check it. I think yesterday or day before yesterday, Piyush Goyal tweeted that as every 5 or 6 days since the start of this year, we are having one new unicorn. हर 5-6 दिन में एक यूनिकॉर्न, हर 5-6 दिन में एक यूनिकॉर्न उभर के आ रहा है. और ये रिगार्डिंग दिस matter, the Shark Tank Anupam Mittal guy also had some interaction with Piyush Goyal. You can go check that on Twitter. It was a nice interaction. Anupam Mittal is telling Piyush Goyal in that yes, India is gaining confidence and India is growing, and India is growing stronger now, and this is the time where India, recently, those who are in our special group and those who are in our free groups as well, I had shared a presentation which Rakesh Jhunjhunwala gave to Honorable Prime Minister, which said that, अपना time आने वाला नहीं है, अपना time आ गया है. Ramdev Agrawal ji has been continuously telling that Sensex is going to 1 lakh and Nifty is going to 30,000. So ये लोग बोलते हैं, ऐसे हवा में कोई नंबर नहीं फेंकते हैं. दे आर नॉट जस्ट गिविंग एनी नंबर के जेब में से कोई नंबर निकाला बोल दिया, ऐसा नहीं है. बेस्ड ऑन ऑल दिस डेटा, ये जो डेटा आपकी आंखों के सामने है, उसके बेस पे ये बड़े बड़े लोग या मेरे जैसे छोटे लोग भी ये बोलते हैं कि नहीं, ये निफ्टी सेंसेक्स से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा अभी, बट 1 साल 2 साल के पीरियड में it is going to explode, and it is you and me who need to be part of this wealth enrichment journey, or we need to be part of this. It is never too late. The younger you start, the better it is, but whenever, whatever, from जागे तो वहां से सवेरा, तो डायरेक्ट इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में आप जिस तरह से कंफर्टेबल हैं उस तरह से यू कैन बी part of this journey. This video will be there on YouTube. मैं ये record कर रहा हूँ, और we will you can have this slides वगैरह के भी snapshot आप ले सकते हैं वहां से. तो manufacturing is going to be big. Sector wise roadmap for 6 lakh crore 6 lakh crore guys spending in from 2022 to 2025. एक छोटे नंबर नहीं है, बहुत 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 बड़े नंबर है. और कौन से फेज में किधर कितना, हाउ the 6 lakh crore is going to be used in next 4 years, that breakdown is here, right? In which sectors the investment is coming or the expenditure will be there, that breakdown is here. Roads, railways, power transmission, power generation, telecom, warehousing, mining, national gas pipeline, product pipeline, aviation, urban real estate. ये एक थीम जिसके बारे में जब हम बात कर रहे थे, कौन सी थीम है, तो ये एक बात करना हम भूल गए. अर्बन रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट मतलब मकान. तो मकान के अंदर जो टाइल्स हैं, मेरे फेवरेट कुछ स्टॉक हैं जो मैं काफी बताता रहता हूँ, भाई सेरा, सोमानी सिरामिक्स, एस्ट्रल, तो एशियन पेंट्स, देन अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक. तो ये सब सीमेंट के स्टॉक्स है, और टाइल्स के स्टॉक है, और सैनिटरी के स्टॉक्स है. तो these are also paints के कुछ स्टॉक है. तो these all are going to, there is a marriage nearby, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस शायद आपको आएगा. I cannot help that situation. तो एविएशन, ports, stadiums, these all are places where investment in massive scale is happening to kickstart the economy. And other than that, to summarize the things, we'll say that policy environment is supportive for growth. Incentives, there are incentives to kickstart lot of things. There is a sign of property. You must have seen how some of the property stocks, Godrej Properties, there was a news how much they are going to invest. Shobha,
India Bulls real estate, which I don't recommend because of certain things. But then there are a lot of real estate players, Joe Prestige Estate, and there are a lot of DLF. There are a lot of real estate players that are, Macrotech, Loda. They are gearing up for big things because of the spending that is going to happen, because of the development that is coming to the urban centers. So this is going to be the theme which will take us forward on the growth trajectory. Banks are getting better in health. NPA के numbers I will share you shortly. NPA is reducing, and the banks and the NBFCs are getting better with the situation around COVID improving by God's grace. The NPAs which were expected, that because of COVID there is going to be a huge NPMS, that does not look as worrisome problem as 1 year back it was looking. So banks also can be, right now it is manufacturing, infrastructure, ये सब, but the next उसके बाद का जो साइकिल होगा, यहाँ ये सब हमको 22-20 हजार तक लेके जाएगा, फिर 22 या 20 हजार से 24 हजार तक भी तो जाना है. तो हो सकता है बैंकिंग हमको और एनबीएफसी हमको लेके जाए उस तरह से, फिर केमिकल, फिर फार्मास्यूटिकल, मतलब कोई ना कोई एक जो सेक्टर होता है या सेगमेंट होता है वो ड्राइवर हो जाता है और वो हमको कुछ और ऊपर लेके जाता है. देन अगेन कुछ और ऊपर लेके जाने के लिए कोई और सेक्टर आ जाता है. So these are the sectors. विशाल भाई, yes पुनीत. विशाल भाई सॉरी प्लीज, मे बी आपने शायद इसमें डिस्कस किया हो, मे बी आई जॉइंड अ बिट लेट. Just wanted to check with you regarding the banking sector. Actually, there are two things. एक तो अभी ये रशिया यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, like they're on the verge of war. सेकेंडली, मैंने आज एक कहीं पे आर्टिकल पढ़ा था, एक एडीजी करके कोई कंपनी है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है विच इज मच बिगर देन नीरव मोदी. उसमें 7-8 बैंक्स इन्वॉल्व हैं, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, जिनका सबका पैसा इन्होंने खाया है. एलआईसी इज ऑल्सो देयर. सो क्या उसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? आई मीन, इज इट अ रियल न्यूज और समथिंग लाइक दैट, और आई जस्ट रेड इट समवेयर? सी, 1-2 दिन में इतना बड़ा स्कैम है तो उसका इम्पैक्ट क्या है ये हमको 1-2 दिन में या तुरंत पता तो नहीं चलेगा. कितना इम्पैक्ट है, किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, एक कहीं से न्यूज आता है, अब बैंक्स का नाम आ गया तो वो बैंक्स भी दे विल गिव अ स्टेटमेंट. तो डिटेल में तो हमको 1 हफ्ते 10 दिन में ही पता चलेगा. लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट जो डेटा है हमारे पास, ये फ्राइडे को न्यूज आया था या सैटरडे को आया था, उसके बाद मार्केट तो अभी खुला है, तो एक नीजर रिएक्शन में थोड़ा हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत नीचे जाएगा. लेकिन द एनपीए नंबर्स दैट आर देयर विद अस, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ. इधर है मेरे पास, ये देखिए इधर, ये ग्रॉस एनपीए एज ऑफ मार्च. ये इमीडिएट नहीं, पार्डन सर, ये स्कैम एक्चुअली, स्कैम जो ये हुआ है ये अभी का नहीं है, ये 2012 से 2017 के बीच में हुआ था. एंड इन्होंने कुछ कोर्ट ने या किसी ने डेट दी थी अभी रिसेंटली, कल की या परसों की, टू समथिंग वाज अलॉटेड एट दैट टाइम टू डिस्क्लोज एंड ऑल दो स्टफ. तो ये मैं आज ही कोई आर्टिकल पढ़ रहा था इंटरनेट पे, इट केम एज एन आर्टिकल. सो जस्ट वांटेड टू चेक, लाइक आपको कुछ आइडिया है इस बारे में? 2012-2017 का कुछ डेटा है ना पुनीत, विल डू क्वेश्चन आंसर्स आफ्टर दैट, वरना ये बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा. तो विल डू क्वेश्चन आंसर आफ्टर दैट. बट अगर 2012-2017 का कुछ है तो ऑलरेडी वो प्राइस डिस्काउंटेड होगा. अभी आपके सामने जो स्लाइड है उसमें ग्रॉस एनपीए के नंबर्स हैं, राइट. प्रॉपर शेर खान रिसर्च से मैंने लिए हुए ग्रॉस एनपीए के नंबर्स हैं विच आर इन फ्रंट ऑफ यू. ग्रॉस एनपीए कितना है और एज ऑफ और नेट एनपीए कितना है एज ऑफ मार्च 2018 और मार्च 2021. So those numbers are in front of you, so you can see that this number is coming down drastically. मतलब 6% का 2.3 is drastic reduction. तो हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं अगले 15 दिन में हो सकता है आप जो बोल रहे हैं वो स्कैम की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है. 800 का 750 जा सकता है, 600 भी जा सकता है, या 650, आई डोंट नो कितना इम्पैक्ट आईसीआईसीआई बैंक पे इसका होगा. लेकिन आईसीआईसीआई बैंक 2025 में मैं कहां पे देख रहा हूं,
आईसीआईसीआई बैंक को 2030 में मैं कहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो है अभी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड पे हम लोग बात कर रहे हैं, इंडिया एज अ बुल मार्केट पे बात कर रहे हैं, राइट। तो हम वो बात कर रहे हैं, ये टॉपिक पे हम सेपरेट बात कर सकते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वेबिनार भी रख सकते हैं। द थिंग इज राइट नाउ कि इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, और जो आप यूक्रेन और इसके वॉर की बात कर रहे हैं वो मैंने की भी है अभी जब हमने शुरू किया तब, और मैं आगे भी इधर मैंने प्रेजेंटेशन में वो पार्ट भी है। तो लेट अस कंप्लीट अवर प्रेजेंटेशन, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी है जिसमें हम लोग इस पे और ज्यादा डिटेल में भी बात करेंगे, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन भी लेंगे और समझेंगे। यस, ऐसे स्कैम तो आते जाते रहेंगे, और किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, किसका कितना उसमें वो है, वो देखना पड़ेगा। वी डोंट नो एज ऑफ नाउ व्हाट इज हैपनिंग। सो सपोर्टिव ग्लोबल एनवायरनमेंट भी है, जिसकी वजह से इंडिया एज एन इमर्जिंग मार्केट इज ऑन फास्ट ग्रोइंग ट्रेजेक्टरी। चाइना प्लस वन जो ऑन पेपर था, एक स्ट्रेटेजी विच वाज ऑन पेपर, वो अभी एक्चुअल रियलिटी में आ गई है। मैं अभी इंडिया में बैठा हूँ, मेरे कुछ दूसरे बिजनेसेस भी हैं which are related to I'm part of some other business also which is related to engineering and infrastructure and automation and robotics, ये सब। तो कौन कितना कहाँ से कैसे आ रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सब हम सेपरेट कभी बात करेंगे टॉपिक पे। सो मैसिव 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 थिंग्स आर हैपनिंग। चाइना प्लस वन एक पाइप ड्रीम था आज से 2 साल पहले, चाइना प्लस वन आज एक हकीकत है कोविड के बाद, शायद कोविड की वजह से या एकोमोडेटिव पॉलिसीज की वजह से या स्पेंडिंग की वजह से, बट एक्चुअल थिंग्स आर हैपनिंग ऑन ग्राउंड। सो दीज आर द थिंग्स विच कीप अस ऑन अ मल्टी ईयर इकोनॉमिक अप साइकिल। ये हो गई मल्टी ईयर इकोनॉमिक अप साइकिल की बात। नाउ कमिंग टू द रिटर्न्स दैट मार्केट गेव इन 2021, ये जस्ट 2021 में रिटर्न दिया है, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि 2022 में या 2023 में भी सिमिलर रिटर्न मिलेंगे हमको, राइट। बट निफ्टी, सेंसेक्स, एस&पी 500, डाउ जोन्स, निकी, हैंगसेंग, शांघाई कंपोजिट, ये सब इंडेक्स के डेटा आपके सामने हैं। 2021 में किसने ग्लोबली सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा, सबसे फैंटास्टिक रिटर्न दिया है, वो भी आपके सामने है इधर। सो यू कैन सी के निफ्टी में से आपको कैसे रिटर्न 2021 में मिले हैं। वी आर ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी, वी ऑल हैव बेनिफिटेड। आगे हो सकता है इससे ज्यादा रिटर्न मिले, जो कि लग नहीं रहा है ये साल, लेकिन एक 14, 15, 10, 12% की रेंज में अगर निफ्टी रिटर्न देता है, CAGR 15 पे रिटर्न मिल सकता है। अगर आप टॉप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो 10 से लेके 15 के बीच में एक रिटर्न की हम उम्मीद रख सकते हैं। वी कैन एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड। So as discussed, in the next 3-4 years, the major sectors are energy, roads, urban infrastructure और railways। और the stages of implementation जो है वो 44 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं, they are under implementation। Planning stage is 33 lakh crores and being developed is 22 lakhs crore। तो ये स्टेट का है, उसमें से पार्टिसिपेशन इधर ये देखिए पीपीपी मॉडल में, इधर स्टेट्स पार्टिसिपेशन इज 39 लाख करोड़, सेंटर पार्टिसिपेशन इज 40 lakh crores and private sector is at 21 lakh crores, right? So this is a huge push, I would say, in capex cycle. We already saw this slide while we were discussing with Puneet कि नेट एनपीएस जो हैं वो कम हो रहे हैं, प्रोविजंस अभी बैंक के कम होने लगे हैं, तो विच इज इंडिकेटिव ऑफ गुड इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंट्री।
अभी ये जो है अर्निंग्स, अभी एंड ऑफ द डे एक जो मार्केट होता है या एक जो कंपनी का रिजल्ट होता है या कंपनी का अर्निंग पर शेयर होता है, इज अ बिगेस्ट थिंग विच इज गोइंग टू ड्राइव द इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड, राइट? तो जो FY 21, 22 और 23 के अर्निंग्स के नंबर अभी हमारे सामने हैं, पिछले 4 5 6 साल से इट वाज हैपनिंग दैट द नंबर्स वर नॉट टॉपिंग अप, द नंबर्स वर रिमेनिंग कांस्टेंट, और देयर वाज स्लाइट ग्रोथ इन द नंबर्स विद ऑफ कोर्स 2020 में जब कोविड का ये शुरू हुआ तो थोड़ा डाउन गया था, बट आफ्टर दैट the projections for this year you can see over here, this year you can see over here, and 22 can see over here, and 23 projections are in front of you. So the estimates from 444 to 864, तो जब अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा 444 का 864 होगा, तो आपको क्या लगता है क्या होगा वो शेयर के प्राइस का? इट विल डेफिनेटली ग्रो। और ये निफ्टी की कंपनीज हैं, और म्यूटेड ग्रोथ जो है काफी लंबे टाइम से, द ग्रोथ विच वाज स्टैग्नेंट, there it seems that there is going to be an explosion or expansion or explosion in the growth of EPS. आप अगर results, if you are following results that are coming every quarter of the companies, the kind of numbers that Tata Steel, SAIL, Nalco are putting are huge growth हो रहा है उनके EPS में, अगर आप देखेंगे तो these are the things that are making us believe that India is on a growth trajectory. It is not just कि भाई किसी का कोई पैसा डाले और कोई पैसा डाले तो हमको फायदा होगा, उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ये सब डेटा आपके सामने है, which is making the case for high growth trajectory of India on a long run. हो सकता है 2022 में अगर यूक्रेन और रशिया का वॉर हो जाए एंड US एंड यूरोप गेट्स इन्वॉल्व, इट विल बी कैटास्ट्रोफ। ये जैसा शायद इधर व्हाट आई डोंट नो व्हाट कैन हैपन, समथिंग लाइक दिस, एक और ऐसा वैली बन जाए, ऐसा हो सकता है। बट इफ यू स्टे इन्वेस्टेड ऑन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ विल कंटिन्यू, जिसके सॉलिड डेटा हमारे पास हैं। अब when the market is volatile, आप देख रहे हैं जनवरी से या दिसंबर से क्या हो रहा है, there is massive volatility in the market. एक दिन मार्केट 500 पॉइंट ऊपर होता है, दूसरे दिन 1000 पॉइंट नीचे होता है, फ्राइडे को 1000 पॉइंट नीचे था, नेक्स्ट वीक में थर्सडे को 700-800 पॉइंट ऊपर चला जाता है। इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। तो ऐसे वॉलेटाइल टाइम में आपको या तो बहुत ही एक्टिव रहना पड़ता है स्टॉक मार्केट में। द स्टॉक दैट यू परचेज एट 1900 कैन बी 1500 इन 2 days, और इट कैन बी 2300 इन 2 days. You have to be super एक्टिव इन द मार्केट। जो स्पेशल ग्रुप में या नॉर्मल ग्रुप में जो मैसेज आते हैं वो ठीक से ध्यान से पढ़ने होंगे। उसमें कुछ स्टॉप लॉस दिए गए हैं आपको, तो वो स्टॉप लॉस आपको बिना झिझक के, बिना ठीक है कल रखूंगा, ऐसे नहीं, आपको रख देना है। कुछ रिमाइंडर आया है तो उस पर एक्शन तुरंत ले लेना है, अदरवाइज इट विल बी वॉलेटिलिटी का आप शिकार हो सकते हैं। और या दूसरा एक आसान तरीका है ये वॉलेटिलिटी को ओवरकम करने का, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। कि भाई मैं एक नंबर डिसाइड कर लेता हूँ, इफ आई डिसाइड अ नंबर से 50K that I will put in the stock market every month, या 5K या 10K I will put in the stock market every month. So if I put that kind of investment systematically in the market, then I can take, आज 1000 पॉइंट नीचे उसका भी मुझको एडवांटेज मिलेगा, और कल 1000 पॉइंट ऊपर होगा उसका भी एडवांटेज मिलेगा। And my investment is averaged out along with the trajectory of the market. Now SIP investment you can do in 2 ways.
by investing directly in the market, in the stocks that we recommend or in the stocks that you find at a good valuation. और सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदो जो, और म्यूचुअल फंड खरीद के उसमें सिप इन्वेस्टमेंट कर दो, तो उसमें आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होगा, तो मार्केट के हर लेवल पे आपका इन्वेस्टमेंट अपने आप होता रहेगा. यस, म्यूचुअल फंड के ड्रॉबैक कुछ हैं कि म्यूचुअल फंड हाउसेस भी अपना खर्चा, अपने आदमियों का सैलरी, अपना लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओवरहेड्स जो होते हैं वो डिडक्ट होता है प्रॉफिट में से, उसमें से जो बचता है सेबी ने कैप, देयर आर कैप्स दैट सेबी हैज kept. There are caps to the expense that mutual fund companies can have, but then they have that expense, right? So आपके नफे में ही नुकसान होगा. Whereas if you invest directly, then you have that benefit, overhead आपका कम हो जाता है, but then you have to be active. If not super active, you have to be active. Long term आप इन्वेस्टर हैं तो भी एक्टिव रहो. आप कैम्स जब 3600 4000 पे था और 3600 का स्टॉप लॉस दिया गया था, तो अगर आप एक्टिव होते तो 3600 पे निकल गए होते. या रिलायंस जब 2700 पे था, 2200 पे आ रहा था, ये 2400 पे एक स्टॉप लॉस था, तो 2400 पे आपने स्टॉप लॉस में निकल गए होते. रिलायंस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलायंस 3000 जाने ही वाला है 1-2 साल में या 6 महीने में, राइट? तो आपका 2700 का 2200 हुआ, 2200 का वापस 3000 तो होने वाला है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट व्हाट कैन आई डू इज कि मैंने 2600 पे जब रिलायंस 2700 से 2500 आया, when Reliance came from 27 to 25, if I was active in the market, what I would have done is I would have sold off some quantity, would have done partial profit booking, and then use that money to invest in some other company that was growing. Then when Reliance growth again will start, I will again put that money in Reliance, right? So this kind of activeness if you are not having, then म्यूचुअल फंड कैन पीपल, कुछ लोग मेरे अपने ग्रुप में ही ऐसे हैं कि वो जो मैसेज में व्हाट मैसेज दैट आई गिव वो पढ़ते भी नहीं है. मैं व्हेन आई से कि भाई एंटर द XYZ कंपनी आफ्टर 2340 क्लोजिंग, तो क्योंकि वो कंपनी का नाम लिखा है तो वो उसमें एंटर हो जाते हैं. वो 2340 क्लोजिंग हुआ नहीं हुआ वो देखते नहीं है, एंड देन द ब्रेकआउट डज नॉट हैपन. फिर मुझे मैसेज आता है कि विशाल भाई ये तो ले लिया है. बोले ये तो नहीं लेना था. 2340 अगर वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, इफ इट क्रॉसेस दैट तब लेना था. हाँ, वो ठीक से मैंने नहीं पढ़ा था. तो वो ठीक से पढ़ना तो पड़ेगा. आपको सुपर एक्टिव नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन एक्टिव तो होना पड़ेगा. और अगर एक्टिव आप नहीं हो पा रहे हैं, इन दैट केस म्यूचुअल फंड कैन बी अ गुड solution. Somebody doing a PMS kind of service on your behalf, जो मार्केट के सामने बैठा है, हमारी भी कुछ सर्विसेज हैं PMS जैसी, that can be a good option. Mutual fund can be a good option for these people, right? तो ये है ग्रोथ ट्रेजेक्टरी. ग्रोथ होने वाला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट में होता रहेगा. देयर विल बी अप्स, देयर विल बी डाउन्स, बट ओवरऑल यू सी हाउ दिस EPS per share is growing. And how this EPS per share is growing, market will also grow in this direction, and the growth will continuously happen as we have seen. These are the reasons why we say whatever we discuss right now. ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि भाई मार्केट ग्रो होगा. कॉन्क्रीट डेटा है हमारे पास, कॉन्क्रीट नंबर्स है हमारे पास, which are showing and shouting from the rooftop कि भाई इंडिया में ग्रोथ होने वाला है, इंडिया का मार्केट ऊपर जाने वाला है. दैट इज 110% कन्फर्म. कब? टाइम लग सकता है थोड़ा, कुछ ग्लोबल फैक्टर, कुछ जियोपॉलिटिकल फैक्टर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से US फेड आ गया तो थोड़ा बहुत होगा उसका इफेक्ट, राइट? रशिया में कुछ होता है तो इफेक्ट होगा उसका, बट ओवरऑल ट्रेजेक्टरी इज पॉजिटिव. नाउ टॉकिंग अबाउट रिस्क, यस, मैं सिर्फ पॉजिटिव बात, आप जानते हैं मैं नहीं करता हूं, मैं सच्ची बात बोलता हूं. तो ये जो फैक्टर हैं विच कैन लिमिट अस फॉर अ शॉर्ट टर्म, जो हमारे प्रोग्रेस की जर्नी को रोक सकते हैं, दे आर कोविड रिलेटेड इश्यू,
तो मेजर है, अगर कोई नया वेरिएंट भगवान ना करे आ गया तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा है, देयर इज ह्यूज मैसिव इश्यू ऑफ इन्फ्लेशन। होप यू हैव नॉट फॉरगॉटन दैट वो एवर ग्रांडे वाला जो चाइना में लफड़ा हुआ था, राइट, वो एक बबल है जो कभी भी बर्स्ट हो सकता है। रेट साइकिल जो है, देयर इज अ रेट साइकिल इश्यू, फेड इज टेपरिंग, हॉकिश स्टैंड जो है फेड का, दैट इज अ नेगेटिव फैक्टर। इलेक्शन सेंटिमेंट definitely affects the market. As you know, UP election is considered semi-final to 2024. So election sentiment can have an issue, or valuations of the market as per international experts are still not very cheap. So these points put the market on a short term at some risk. Again, international factors, tapering of US Fed, as we all know, hike in all the governments, all the central governments, US Fed जो है वो टेपर करेगा, तो जो सारे सेंट्रल बैंक्स है ना, they also tend to follow the footsteps and they also tend to taper और hawkish होते हैं. Fortunately RBI is dovish, still अभी भी dovish है क्योंकि ग्रोथ पे ट्रेजेक्टरी पे ही जाना है. चाइना तो dovish नहीं है, इट इज accommodative, वो तो सपोर्ट कर रहा है अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने में. तो चाइना और इंडिया हॉकिश नहीं है, बाकी पूरा ग्लोब थोड़ा हॉकिश हो रहा है. तो इन्फ्लेशन इज अ जेन्युइन कंसर्न. और यूक्रेन वाला जो मैटर है, रशिया यूक्रेन जो बिल्डअप है, वो तो एक इश्यू है जो पूरे ग्लोब के हर एक मार्केट को इन्वेस्टमेंट में इफेक्ट कर सकता है, राइट. तो इसमें क्या कर सकते हैं जब ऐसे अनसर्टेनिटी होती है ना, तो गोल्ड बढ़ता है. तो गोल्ड रिलेटेड म्यूचुअल फंड भी तो है, गोल्ड ईटीएफ्स भी तो है. तो इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ सेगमेंट तो चलता रहेगा, राइट. तो ऐसे भी कई म्यूचुअल फंड होते हैं जो मल्टी एसेट को देखते हैं. मल्टी एसेट गोल्ड से रिलेटेड म्यूचुअल फंड होते हैं, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो पार्शियली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं. तो दिस कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन. डायरेक्ट गोल्ड ईटीएफ भी हम लोग खरीद सकते हैं. अदर बेनिफिट्स म्यूचुअल फंड के क्या है? तो ईज ऑफ ट्रांजैक्शन, आपने 10,000 डाल दिया, आपको लफड़ा ही नहीं है विशाल बलिया के मैसेज पढ़ने का, या किसी के मनी कंट्रोल डाल के मैसेज पढ़ने का, या XYZ न्यूज़पेपर पढ़ने का, कि भाई कौन सा लेवल आया. विशाल बलिया ने बोला था 2340 के ऊपर खरीदना, 2225 के नीचे स्टॉप लॉस रख देना. तो वो सब अपने आप आपने पैसा किसी को दे दिया, वो अपने आप करेगा वो चीज, एंड इफ यू इन्वेस्ट सिस्टमेटिकली यू गेट बेनिफिट ऑफ द साइकिल. ऊपर हो तब भी आपका इन्वेस्ट हो रहा है, नीचे जा रहा है तो भी इन्वेस्ट हो रहा है, ऊपर जा रहा है फिर से तो भी इन्वेस्ट हो रहा है. यू कैन इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट. अभी एक मुझे पेज इंडस्ट्रीज खरीदना हो तो 40,000 का एक शेयर है. MRF खरीदना हो 80,000 का एक शेयर है. Sanofi is around 7,600, Wabco is around 8,000, 3M is around 23,000. But if I select a stock which is investing in that sector, 5,000 रुपया पर मंथ भी मैं वो कर सकता हूँ, राइट. तो स्मॉल अमाउंट इज ओके. प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है म्यूचुअल फंड, right. There are experts from across the field. It requires less time devoted. This is the main thing. So not only you need to read what messages are there in Happy Candles group and Money Control and XYZ, you put the money, forget it, fill it, shut it, forget it. That kind of ease of investment is there in mutual fund, definitely. And it is an efficient way of investing. So how it happens? So there are AMC asset management companies. They create products with the approval of trustees and share the offer document with SEBI. I'll just have a little bit of water. They invite subscriptions through NFO. NFO 15 दिन खुला रहता है. फिर when it lists तो फिर NAV पे वो ट्रेड करता है. You make key decision information document with the application form is to be read, right. So this is how a mutual fund is formed.
सेबी के अप्रूवल के साथ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेबी के बाद वो एसेटमेंट कंपनी का पूरा स्टडी करने के बाद एक फंड लॉन्च होता है. So the kind of mutual funds. Hi guys, can you hear me? It was understood. Yes, सुन पा. क्योंकि मुझे लगा कि कुछ इंटरनेट में डिस्टर्बेंस था. Okay. So the kind of mutual funds that are there are equity. Then there are hybrid mutual funds. There are debt mutual funds. There are others like ETF or assets related होते हैं solutions. So these kind of mutual fund products are there. इक्विटी आप जानते हैं कि इक्विटी जो होता है दैट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, राइट. फिर जो हाइब्रिड होता है और डेब्ट होते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं और जीसेक बॉन्ड्स होते हैं. सो दैट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डेब्ट मार्केट, कि उसमें एक फिक्स रिस्क कम होता है डेब्ट मार्केट में, कि भाई डेब्ट गवर्नमेंट के एनएचएआई के बॉन्ड है और जो दूसरे बॉन्ड हैं गवर्नमेंट के उसमें एक फिक्स डिपॉजिट की तरह होते हैं कि भाई इतने टाइम बाद इतना परसेंटेज ऐसे मिलेगा ही, राइट. सो देयर आर द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ग्रोथ इज लिमिटेड एग्जैक्ट परसेंटेज, but at the same time risk is also limited. So there are funds which invest in debt instruments. So you can expect returns close to fixed deposit or just above fixed deposits, 1 or 2% more than fixed deposits. Then there are hybrid funds. Hybrid fund क्या होता है? This is the interesting part. So hybrid funds are of 2-3 types. One is direct hybrid fund कि भाई 40% in debt and 60% in equity. Say 20% in debt and 80% in equity, or 50% in debt and 50% in equity. But वो जो percentage है that can be changed if the market is going to be a bull market. I know that के resistance level cross कर दिए, so you can swap that percentage. So 60% was in debt and 40% was in equity. You can swap it and make 60% in equity and 40% in debt. So when the market is falling, your debt part is more, investment in debt part is more, and when the market is growing, you can invest in equity part more. So this is the advantage of hybrid mutual fund, right? Then there are multi-asset mutual funds, जो मैंने आपको बताया कि भाई गोल्ड वगैरह ETF वगैरह भी होते हैं. So this kind of investment criteria are also there. So a product is there which can give us good benefits end of the day if you utilize it properly. Is the hybrid fund the same as the BAF, the Balance Advantage Fund? Pardon? Yeah, there can be many. Yes, Balance Advantage Fund. Then balance can be also, Ramaji, balance can be between large cap, mid caps and small cap, market cap based funds are there. Multi cap based funds are there. Flexi funds are there. So these are all, several options are available. We will, when you want to invest in that segment, we will discuss in person. We are here just giving a broader view, right? So large cap funds, as the name suggests, they will invest only in large cap companies. 80% of the fund goes in large cap. Then there are funds for large cap and mid cap. So majority in large cap, then in mid cap. Mid cap funds will invest 65% money in mid cap. Then small cap funds are there. Then there are flexi cap funds or multi cap funds, right? Then there are value funds. Value funds क्या होता है कि भाई PE, we will invest in companies only in a certain PE zone, price to earning zone, which are value attractions. So those kind of value funds are there. Then dividend funds are there, that these funds tend to invest in companies which give high dividend. So that kind of funds are there. Sectoral funds are there, like pharma fund, banking fund, IT fund. The funds that invest in particular sector. Then in addition to that, there are thematic funds, healthcare, global healthcare fund, global blue chip fund. That kind of thematic funds are also there.
So some names of some of the विशाल funds. विशाल भाई विशाल Yes. विशाल भाई सॉरी, एक मिनट पिछली स्लाइड पे जाएंगे, एक बार पिछली स्लाइड पे जाएंगे Okay. सर। Yes. मेरे ना दो क्वेश्चंस हैं। एक जैसे आप परसेंटेज दिखा रहे हैं लार्ज कैप फंड्स में 80%, देन मिड कैप में 65, तो रिमेनिंग जो है 20% और 35% कहाँ जा रहा है? डेप्ट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो? इट डिपेंड्स, कई बार डेप्थ में होता है, कई बार अगर मल्टी कैप फंड है तो इट इज इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप और द कंपनीज विच मे नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ लार्ज कैप, बट this company thinks that they are future large cap. ऐसे every fund has some offer document जो होता है ना, in that there is specific details are given. But you know what SEBI is trying? SEBI is trying to even squeeze that norms कि नहीं भाई जो आप बोल रहे हो वो ऐसा ही इसी डेफिनेशन के अंदर फिट हो, वैसा ही होना चाहिए, टू लिमिट द रिस्क को कम करने के लिए, क्योंकि काफी नए लोग आ रहे हैं बुल मार्केट देखते हुए, because the bull market was fantastic last 2 years, so lot of new people are coming. So SEBI, to protect or guard the new people who are entering the market, they are becoming very specific and very vigilant, and they are setting the norms very specifically कि नहीं आप ऐसे ही कर सकते हो, you can invest only in these kind of companies. There are some it is a very big subject. We will discuss again in person if required, and every Sure. offer document has the specifics of each fund where it will invest what percentage or what part of money. Yeah, this is just Sure. in general I am saying, right Puneet? श्योर। विशाल जी एक और क्वेश्चन है On जो अभी broader आपने पिछली स्लाइड definition पे, I am yeah, करेक्ट, एक डेप्ट फंड आपने दिखाया था, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट yes. जो आप कह रहे थे, तो जो हमारा जो पीएफ या पीपीएफ जो है दैट इज आल्सो अ डेप्ट, राइट? तो उसमें और इस डेप्ट फंड में क्या फर्क है? There can be corporate debt funds, क्योंकि एक एशियन पेंट जो है वो भी, उसको भी अगर एक्सपांशन करना है, एक नेशनल हाईवे भी करता है, देयर आर प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आल्सो. So these mutual funds can invest Shriram Transport and Muthoot Finance, and they can invest in these kind of private companies also. PPF will not be able to invest in private companies to a large extent. Nowadays they do, but to a large extent they cannot do it, right? But एक L&T mutual fund or एक Quant mutual fund or एक ITI mutual fund, they can do it, but they have to remain strict under the regulation of what SEBI is trying to guide them and what they have written in their offer document. ओके, श्योर। Okay. और ये अगर डेप्ट फंड खरीदा जाता है तो इस डेप्ट फंड पे कुछ टैक्स रिबेट भी मिलता है या क्या? बिकॉज हमारे There are पीएफ और ELSS पीपीएफ के funds, जैसे ELSS funds, debt mutual funds पे भी कुछ टैक्स होते हैं, कुछ टैक्स नहीं होते हैं. So there are different kind of that is a whole different subject, taxation related. We will have we are trying to invite some experts from ICICI MF or SBI MF or HDFC, and we will have those people in हमारा जो take the stock session है. In those talk sessions, I will try to invite the experts from mutual fund industry, और exact taxation related जो question है वो हम आंसर कर सकते हैं. उसमें मैं एक एक्सपर्ट टैक्सेशन का गाय नहीं हूं, मेरे जो पार्टनर हैं दासानी भाई, if he is available, दासानी भाई can you unmute? We have fortunately जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं मिस्टर दासानी भाई, he is a part of Happy Candles and he is an expert taxation guy. So whatever help you will be requiring related to taxation, we might be able to give. Right now maybe he's not able to unmute because of the situation where he is, but I assure you that we can guide you and we can assist you and answer all your questions related to taxation. There are specific funds which can help you with tax. There are funds where tax will be deducted, and and that so on. It is a separate
टॉपिक वो भी अभी हम लोग लेंगे ना, तो 1 घंटा तो ऑलरेडी होने आया है और 1-2 घंटे इसमें लग जाएंगे. सो विल कीप दैट टॉपिक फॉर सम अदर डे इफ यू डोंट माइंड, and we'll also have experts from the industry talk to you. Okay, so here are the name of some of the funds which we consider are good. Now ये देखो, एक aggressive portfolio किसको मैं कहूंगा in a mutual fund. An aggressive portfolio will be 40% investment in large cap, 30% in mid cap and small cap, and 30% in flexi cap, you know, that kind of ये डेप्थ में या इस तरह से. So some of the, what is the minimum time horizon that you should invest for in these funds? So 5 years. And you know the name of some of the funds I have mentioned over here: Axis Bank, Axis Blue Chip Fund, HBFC Large Cap Funds, Canara Robeco, Kotak Blue Chip Fund, Franklin India Blue Chip. So these are the names of some of the funds. If you are interested, आप मुझे मैसेज करेंगे तो ये सब डिटेल में आपको दूंगा, शेयर करूंगा, और ये सब फंड खरीदने में भी हम आपको हेल्प करेंगे. मिड कैप के लिए कौन से बेस्ट फंड है उसका भी ये लिस्ट है. फ्लेक्सी कैप में कौन से बेस्ट फंड है, वी हैव कलेक्टेड दिस डेटा एंड we will share with you as and when you require. You just let us know you want to go aggressive or you want to go moderate. The best moderate funds in our opinion are some these funds, right, where large cap 40, short duration dynamic asset allocation is 40, and mid cap small cap is 20. So these kind of funds are there. For some names may repeat in different places. Axis small cap fund, mid cap में कौन से हैं, डायनामिक एसेट एलोकेशन में बड़ौदा ICICI का कौन सा बैलेंस एडवांटेज फंड है. सो द होल लिस्ट ऑफ नेम्स इज देयर. मैं सब अभी पढ़ नहीं रहा हूं, but we have the data. I am assuring you that we have the data, and as per your requirement we will share this data with you. This is the data about conservative portfolio where corporate bonds are 40%. I'm sorry for the noise in the background. Low short duration is 40% and dynamic asset is 20%. Some of the names: Aditya Birla Sun Life Corporate Bond, IDFC Corporate Bonds, Kotak Corporate Bond Fund. So you know, as you said, ये conservative थोड़ा होगा, रिटर्न आपको कम मिलेंगे. मिनिमम टाइम horizon you should think of investing is 3 years, and every 12 months you can, you know, change the allocation kind of thing. So these are some of the funds that we have shortlisted for a conservative portfolio जिसको रिस्क कम लेना है, और ग्रोथ कम होगा तो चलेगा, लेकिन बाबा अपने को रिस्क कम चाहिए तो वो कंजर्वेटिव फंड में पैसे डाल सकते हैं, राइट. So this is some of the funds that we will suggest you. You can contact us and we will give you all the details. अभी हैप्पी कैंडल्स इन्वेस्टमेंट जो है, we have successfully empaneled with the companies that are enlisted over here in this slide. So we have empaneled with SBI mutual fund. हम SBI mutual fund के सारे प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं. Axis, MF, HDFC mutual fund, ICICI, Kotak, Parag Parikh Financial Advisory Services, ITI, Prudential Group, White Oaks, BlackRock, DSP, Franklin Templeton, IDFC, L&T, Tata Mutual Fund, SL Quant. That is not all. We continue on the next slide. Quantum Mutual Fund, LIC, Navi, Samco, IDBI, UTI, which was earlier Unit Trust of India Mutual Fund, Nippon, जो Reliance Money था पहले, or Union Mutual Fund, and some more empanelments are still in process, Canara Robeco और ये सब का. So these are the companies जिनके प्रोडक्ट, हर एक कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो we have a big basket of products which we will be able to offer you. ये सब के हम ऑफिशियल empaneled पार्टनर हैं ये सब कंपनीज के. So believe me, it is a big basket of products that are available with us. And ये सैमको म्यूचुअल फंड नया है, कंपनी है जिसका आप ऐड देखते होंगे न्यूज, इसमें टीवी में आता है क्रिकेट मैच में. So believe me,
the pool of the choice जो है हमारे पास बहुत बड़ा है. आप हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए जो आपका रिक्वायरमेंट है. क्या क्वेश्चंस एक म्यूचुअल फंड के जो एनालिस्ट हैं या म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसको पूछने चाहिए? वो पूछते हैं नहीं पूछते हैं मुझे मालूम नहीं है. आपने पहले भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया होगा. यू वुड हैव इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स अर्लियर. But the questions that we will ask you are, what is your goal? Say I want to save, invest in mutual fund so that I can buy a Tata Nexon in 2 years, or I am investing for education of my child in 10 years, or I am investing for my retirement. So for me, it is important to know your goal. Second thing for me to suggest you a fund is to know your risk appetite. अरे भाई अपने को रिस्क चलेगा या रिस्क नहीं चलेगा. आई वॉन्ट टू बी वेरी कंजर्वेटिव. इसमें एक एज फैक्टर भी होता है. एज योर एज इंक्रीजेस द मोर कंजर्वेटिव यू शुड बी इन इन्वेस्टिंग. इक्विटी में कम करते 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 आप जनरली जो हमको सिखाया जाता है एनआईएसएफ में वो मैं बोल रहा हूँ, इक्विटी में कम करना चाहिए और डेब्ट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में बढ़ाना चाहिए. तो आपका रिस्क एपिटाइट क्या है? This is an important question. The next important question is आपको लमसम एक टाइम में एक अमाउंट डाल के भूल जाना है, fill it, set it, forget it करना है, या आपको सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट हर महीने x x x x x x x x x अमाउंट करते जाना है? This you need to tell me. आपको एक जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है ना, there is also a systematic withdrawal plan. कि मैंने 50 लाख समझो 5 लाख डाल दिया, अब मुझको उसमें से हर महीने आई वांट 30,000 बैक. तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स आर आल्सो देयर. लेस पीपल नो अबाउट इट, एंड यू कीप गेटिंग जो रिमाइंडर अमाउंट बच गया वो इन्वेस्टेड रहेगा, एंड देन यू गेट बेनिफिट ऑन दैट अमाउंट, एंड वो बढ़ता रहेगा. एक साइड से कम भी होता रहेगा बिकॉज यू आर विड्रॉइंग सिस्टमेटिकली. बट देन द रिमेनिंग अमाउंट जो है that will take care of. ज्यादातर क्या होता है ऐसे फंड्स में, वो एक अमाउंट कुछ आपको हर महीने मिलता रहेगा, बट देन आपका प्रिंसिपल जो है वो सेम का सेम रहता है. सो ऐसे भी कई प्लान होते हैं. देयर आर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स. देन यू नीड टू टेल मी whether you want to invest for a short term or a long term. Short term in mutual fund is generally few years, 2-3 साल को हम short term बोलते हैं. ये स्टॉक मार्केट जैसा नहीं है. तो शॉर्ट टर्म इज 2-3 years का आउटलुक है या 5-10-15 साल का आउटलुक है, राइट? दैट यू नीड टू टेल मी. इन एडिशन टू दैट you also need to tell me okay, no, some people will only say no, I will only go with SBI, Axis, NDFC and ICICI or Kotak mutual funds. I don't know this BlackRock, I don't know this Tata mutual fund, White Oaks क्या है, PGIM क्या है, पराग परीक कौन है. So I will go only with these top 5 names in the market. So whether you want to go only with the top 5 names, no problem, we have the options available. Whether you trust new players or Parag Parikh and all are not new players, by the way, they are massive players. When we will discuss this topic, we'll explain you. Or somebody like Samco or UTI, or you are okay to go with the Quantum Mutual Fund, or these players are comparatively new players but are giving very good returns. So are you open to go with the other than big names? It will be purely your choice. We will give you the options कि भाई ये similar type का fund है. Suppose corporate bond fund of ICICI is giving 7%, but if you go with Quantum, it is giving 7.5%. So if you are okay to go with Quantum Mutual Fund, then you can get 7.5%. For example, एक hypothetical example दे रहा हूँ. But you will say, no, I don't know Quantum, I know ICICI, I will go only with ICICI. So in that case, no problem for us. We will give you all the options, but these are the questions which you need to answer us. We will share this slide with you, and you can even take a snapshot of this slide. You can give me the answers of these questions and we will suggest you. And of course, most important, kitna invest karna hai, how much money you want to put in lump sum or SIP. Okay.
So these are some of the basic questions which you need to answer, and we will suggest the best possible fund for you. Options that, as I told you, 25, 26, 27 कंपनियों के साथ हम empaneled हैं. The options that we are going to give you is going to be absolutely fantastic. This is our Association of Mutual Fund official registration of the distributor. AMFI का मैं authorized distributor हूँ. This I already shared in the group, and you might be having this data. Also, I would like to inform you about our upcoming training program that is scheduled to begin later during the end of this month. And here you will learn, those who have done the session, they will tell you it is a purely interactive session that we have. You will learn fundamentals, basics of the stock market, right from stock market share kya hai, basics to what is chart, what is fundamentals, what fundamentals you need to look at, what are supports, resistances, EMAs, exponential moving averages, simple moving average, trend, triangle, resistances, symmetrical, asymmetrical, supports, what is a breakout, Fibonacci levels, parallel channels, Fibonacci channels, moving average, converging divergence, relative strength index, lot of arms and ammunitions you can learn by joining this workshop. The fees is 12,000 rupees, but if you are part of the special group, there is a massive discount of 40%. So if at all you are interested in this workshop, I tell you, it is going to be a life-changing experience. Please do join it, and I assure you, you will not regret it. It will be worth every money, every paisa that you pay. It will be worth it. You can ask some of the guys who have already attended it, and they will tell you the same. Additionally, we have विशाल भाई वो account मुझे opening. आप Account कंफर्म opening. कर दीजिएगा कब स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ, 20 तारीख से है पुनीत. मैं कर देता हूँ आपका कंफर्म. सर वो कंफर्म कर दीजिएगा. हाँ, ठीक है पुनीत. I have noted your name. So additionally, we are providing you account opening, demat account opening services. We are also having services like customized intrinsic financial and special education service. You can contact us for more details. It is something like portfolio management services, not officially portfolio management, but something like that. So those interested in that, वही काम करते हैं जो म्यूचुअल फंड करते हैं, वैसा ही कुछ शायद हो सकता है. यू कैन कॉन्टेक्ट अस. तो मैं आपको बताऊंगा ये कस्टमाइज इंट्रिंसिक फाइनेंशियल सर्विस क्या है और स्पेशल एजुकेशन सर्विस क्या है. दिस यू कैन कॉन्टेक्ट अस टू नो. It is not portfolio management, but it might be something similar, or it can be totally different. You contact me and we will explain it further to you one-on-one. And when we talk about mutual fund, I will also like to say this. ये by heart होगा आप सबको कि mutual fund are subject to market risk, and please read the offer document carefully before investing. तो ये एक जरूरी होता है जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो giving this disclaimer is necessary. I would like to thank you all. Weekend में you all were very patient and you were part of this webinar. Thanks a lot for joining. And if you have questions, you are please welcome to ask them, or you're most welcome. You can unmute yourself and we can have a 5-10 minute quick question answer session. I hope this program was interesting, and I hope I was able to throw you some knowledge about the system. You can please let me know your comments. ये आज का सेशन कैसा लगा? और कुछ क्वेश्चन है, प्लीज आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके. Or if you want, you can use the chat box also to ask the questions. You can just
unmute and ask the questions if you want, or we will close the discussion over here. आप आपके फेसबुक ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, there you can definitely ask the questions and I will give you answers related to the subject. Akif is saying fantastic session. Thanks a lot, Akif bhai. If any other person has any other questions, you can ask right now, or I will end the meeting for all. Thank you, Vishal bhai. Thank you. Okay, Ramaji. Thank you, Vishal bhai. It was a good session, really. Thank you. My pleasure. My pleasure. Jain bhai. Thank you, Vishal bhai. Okay, Very Puneet. informative. I'll connect with you offline. I'll connect with you. Yeah, sure, Puneet. Okay, Reena ji, thank you. Thanks for your compliment. Thank you, Vishal ji. My pleasure. Okay, guys, I will end the session here. And if you by chance have any question, just let me know in our respective groups. I will try to answer it. Have a nice weekend of whatever is left in the weekend.